analysis. That is going to be the lecture 2. Then transmission electron microscopy. And after this, I will be delivering the lecture about atomic force microscopy, AFM, and scanning tunneling microscopy, that is STM. And in last, I will be delivering the lecture about spectrometer, that is IR and UV visible, as well as FTIR spectrometer. So I will give you 5 lectures from this unit, that is experimental tools and techniques. So I'm going to start with this first lecture, that is principle and applications of powder X-ray diffractometer. So first I'm going to give you the introduction of X-rays. So as you must be knowing that X-rays are part of electromagnetic spectrum. So X-rays were discovered in 1895 by scientist Röntgen, and these electromagnetic radiations described as having packet of energy of photons, and obviously it is presented by E equal to h mu, where E is the energy and h is Planck constant and mu is the frequency, and further we can convert it into wavelength, that is E equal to hc upon lambda. So we can present our electromagnetic spectrum in all these 3 terms: frequency, wavelength and energy. And energy and wavelength is having inverse relation. So electromagnetic radiation can be expressed in terms of energy, wavelength or frequency. I am moving forward. Moving forward, I am going to talk about the radiations which are present in electromagnetic spectrum. So there are basically radio waves, microwaves, infrared, near infrared, visible, ultraviolet, X-rays and gamma rays. So here in this table, they are, frequency range and both wavelength range for these radiations are given. So you can see easily that these radio waves has a frequency around 3 into 10 to the power 11, and then microwaves have more frequency than this, and gamma rays has the maximum frequency, and correspondingly wavelength is less for the gamma rays. So radio waves has maximum wavelength, and then all the other radiations have less wavelength than the radio waves, and especially our X-rays, they are in between gamma rays and ultraviolet rays. So if we have this wavelength range from 1 nanometer to 1 picometer, so obviously they are more energetic than the visible rays. So they are more energetic, it means they can penetrate more, they have more penetration power as compared to our visible light. So that is why we use this X-rays to analyze the crystal structure of our given crystal or our given material. So in this lecture, I am going to cover about the various aspects about the X-rays, that how we can, with the help of X-rays, we can know the crystal structure of the material, and how this X-ray diffractometer works, and what are the different methods of X-ray diffraction, and based on those methods, what are the applications of these X-ray diffraction methods. So I'm going to move towards this X-ray diffraction topic further. So X-rays are electromagnetic radiation with wavelengths 1 picometer to 1 nanometer, which I have shown you just now. I have shown you with the help of the table. So the wavelength of X-ray is on an atomic level and is much smaller than of visible light. So visible light is having wavelength from 400 nanometer to 750 nanometer, but X-rays are having wavelength from 1 picometer to 1 nanometer, so which is much less than visible light. And in other way we can say they have more energy than visible light. It means they are having more penetrating power.
Since X-rays have a smaller wavelength than visible light, they have higher energy and are more penetrative. Its ability to penetrate matter, however, is dependent on density of the matter, and therefore X-rays are useful in exploring structures of atoms. So that is why we can have the information about the different crystal structure with the help of X-rays. So as you all of you must be knowing about that, we are having 7 crystal system and 14 Bavis lattices. So with the help of X-ray diffraction methods, we can know the exact structure of our material or crystal. So X-ray crystallography is a technique used for identifying the atomic and molecular structure of a crystal, in which the crystalline atoms cause a beam of incident X-rays to diffract into many specific directions, and this forms a yes, pardon? मैम आपकी टेबल वाली स्लाइड ही ओपन है ना इस वक्त? टाइप ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की जो टेबल है. No, I am moving forward. मैम शो तो वही हो रही है. Okay, wait, I am checking. Okay, now it is there. The X-ray diffraction slide. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So I was talking about this X-ray diffraction and range of wavelength which it can cover, and we can observe the diffraction pattern of our crystalline material, which is having a fixed crystal structure from 7 crystal system or 14 Bavis lattices. So we can know the structure about the material with the help of X-ray diffraction. So next, in this X-ray diffraction process, you will see that both interference and diffraction patterns are formed. So we are going to have constructive interference, and from that this diffraction pattern forms, from which we can have the information about our crystal structure. So X-ray diffraction is a phenomena in which the atoms of crystal, by virtue of their uniform spacing, cause an interference pattern of the waves present in an incident beam of X-rays. So the atomic planes of the crystal act on the X-rays in the exactly the same manner as does a uniformly rule grating on a beam of light. So it is having a similar kind of concept. So because X-rays are bundles of separate waves, each wave can interact with one another either constructively or destructively. So both kind of interference can be there, constructive interference or destructive interference. So the interaction between wave is called interference if waves are in phase, meaning that each other, their crest and troughs occur exactly at the same time, then the waves will stack together to produce a resultant wave that has a higher amplitude and results in the constructive interference. That is what we observe in X-ray diffraction method, and due to this constructive interference, diffraction patterns form. So if the waves are out of phase, then destructive interference occurs and the amplitude of the resultant wave will be reduced. If waves are exactly out of phase by multiple of this and by 2 lambda, then there will be complete destructive interference and the resultant wave has no amplitude, meaning that it is completely destroyed. So in this case, we will not obtain any kind of diffraction pattern, but when we have this constructive interference or coherent scattering, we can say that in case of constructive interference, coherent scattering is there, and in this case, we are going to have this incoherent scattering when waves are out of phase. So we are going to have this diffraction pattern in case of constructive interference. So let's move further. So now I'm going to discuss the principle of X-ray diffraction. So the principle behind this is Bragg's law. So I'm going to move towards the Bragg's law. So the atomic planes of a crystal cause an incident beam of X-rays to interfere with one another as they leave the crystal. The phenomena is called X-ray diffraction. So this is the simple definition of X-ray diffraction, that when the atomic planes of a crystal cause an incident beam of X-rays to interfere with one another as they leave the crystal, and definitely they form, there is constructive interference and then diffraction pattern formed. So this is called X-ray diffraction, and scattering of X-rays by the atoms of a crystal that produces an interference effect, so that the diffraction pattern gives information on the structure of the crystal or the identity of a crystalline substance. So X-ray diffraction is based on constructive interference of monochromatic X-rays. Monochromatic X-rays means that we are
going to have single wavelength only. So that is why I am using this term monochromatic X-rays. If polychromatic X-rays term is used, then it means multiple wavelengths are involved. And a crystalline sample. Crystalline sample, it means the sample which is having a crystal structure in very ordered way. I mean, some kind of order is there, and it is following the crystal system from 7 crystal system. It can be cubic, it can be tetragonal, it can be rhombohedral, orthorhombic. So it must be following some systematic structure, or it must be crystalline. Or X-rays are relatively short wavelength that I told you. So electromagnetic radiation EM and can exhibit wave characteristics such as interference when interacting with correspondingly small objects. I hope the slides are moving. Now I am in slide constructive versus destructive interference, that is coherent versus incoherent interference. So here the discrimination between this constructive versus destructive interference is shown. So waves that complete in phase add up to relatively high radiance, that is shown in this figure, and this is constructive interference, and also we can say coherent scattering is there. The second case is when waves that combine 180 degree out of phase cancel out and yield zero irradiance, then it is destructive interference or coherent. Or waves that combine with many different random phases nearly cancel out and yield very low irradiance, that is incoherent radiation is there. So we can have any of these. So in this case of X-ray diffraction, so we are going to have this constructive interference due to that diffraction pattern forms. So I'm moving forward towards Bragg's law, which is the principle behind X-ray diffraction methods. So Bragg's law is a special case of diffraction which determines the angles of coherent and incoherent scattering from a crystal. That is, when X-rays are incident on a particular atom, they make an electronic cloud move like an electromagnetic wave. So when the X-ray is incident or to a crystal surface, its angle of incidence theta will reflect with the same angle of scattering theta. And then when the path difference d is equal to a whole number n of wavelength, constructive interference will occur. So when this condition will be satisfied, then only this constructive interference will occur, and this will make the diffraction pattern. So Bragg's law can easily be derived by considering the conditions necessary to make the faces of the beams coincide when the incident angle equals to reflecting angle. The rays of incident beam are always in phase and parallel up to the point at which the top beam strikes on the top layer at atom Z. So which I am going to show you with the help of diagram. So you can see in this diagram that two planes are separated by the distance d, and when one ray is incident on this first plane at point Z and second ray is incident on second plane at point B. So these are the 2 points. One is at point Z and one is at point B. So I am going back to the last slide. Bragg's law can easily be derived by considering the conditions necessary to make the faces of the beams coincide when the incident angle equals to reflecting angle. So the rays of the incident beams are always in phase and parallel up to the point at which the top beam strikes the top layer at the atom Z. The second beam continues the next layer where it is scattered by atom B. The second beam must travel the extra distance AB plus BC, which I am going to explain you with the help of diagram also, if the two beams are to continue traveling adjacent and parallel. So this extra distance must be an integral and multiple of the wavelength, that is lambda, for the faces of the two beams to be the same. That is n lambda is equal to AB plus BC. So let me explain you with the help of this diagram. So this is the first beam that is incident on first plane and at point Z, and the second beam is at B. So it has to cover this distance AB plus BC. By having this condition, AB plus BC is equal to n lambda, where n is the integer and lambda is the wavelength. So when this condition is satisfied, then only it happens. So recognizing D as a
hypotenuse of the right triangle ABZ. So if you take this triangle separately, ABZ, which is shown here in this figure, ABZ. So this is given as distance D, that is the this hypotenuse. So we can have calculation with the help of this particular ABZ. So the distance AB is opposite to theta, so AB is equal to d sine theta. So AB is equal to d sine theta, and since AB is equal to BC, AB is equal to BC, so we can write this equation as this equation 1. Equation 1 was N lambda is equal to AB plus BC, and since AB is equal to BC, we can write N lambda is equal to 2AB. So N lambda is equal to 2AB, and then we will substitute this value from equation 2 to equation 3. Then we are going to have N lambda is equal to 2D sine theta. So the principle is that when a beam of X-rays of wavelength enters a crystal, the maximum intensity of the reflected ray occurs when sine theta is equal to N lambda by 2D. So this is the condition where theta is the complement of the angle of incidence, and is the whole number, and d is the distance between layers of atoms. So that is how we can derive this Bragg's law. So Bragg's law is simply N lambda is equals to 2d sine theta. So Bragg's in this picture, in this figure, I mean it is giving you the complete picture of Bragg's law, that is N lambda is equal to 2d sine theta. It's a similar diagram. So you can see that incidence angle theta and this reflected angle theta, and the first beam is at point Z and the second beam is scattered at point B, and this condition should be satisfied. AB plus BC is equals to N lambda, and please keep this in your mind that AB is equal to BC. Since AB is equal to BC, so we can always write 2AB is equals to N lambda. So this will be by taking this triangle ABZ, we can have this value sine theta equal to AB upon small d, so, or we can say AB equal to d sine theta. So we are going to have this Bragg's law N lambda equal to 2d sine theta, and here it is written in terms of Miller indices also, that is d HKL and sine theta HKL. So n is the integer and it's called the order of diffraction also. So now this picture is showing the X-ray diffractometer. That is, I mean, the picture from the X-ray diffractometer. That is what is X-ray diffractometer and how it works. That is what I am going to explain you. So in X-ray diffractometer, first X-rays are produced, and then they interact with the our crystal or sample, and then they produce this our diffraction pattern. So you can see that cathode ray tube is there. That is under vacuum. That is vacuum chamber is there, and you can see that high voltage is applied here. And first in cathode tube, these I mean this red one is the tungsten target. So electrons interact with tungsten target, and they dislodge the atoms from the target, and then these X-rays are produced. You can see that X-rays are produced, and filter is there to filter the, I mean, because we have to use only one single wavelength, because we are going to use monochromatic X-rays. So it means monochromatic X-rays that we are going to use only single wavelength. So filter is there to filter out the other wavelengths, and this collimator is there to collimate the beam of X-ray. And then this is pink one is the sample holder. So this X-ray beam is interacting with our sample or crystal in angle in terms of this rotator is there where sample is kept in middle, and this is the angle 2 theta, and filter is there, and detector is there which detects the pattern which is forming there with the help of this process. So I'm going to explain you one by one. So X-ray diffractometers consist of 3 basic elements: an X-ray tube, a sample holder, and an X-ray detector, which I have just shown you in this figure. X-ray tube, where the X-rays are generated, this sample holder, and the detector,
which is collecting all the data and forming the diffraction pattern. So this consists of three basic elements. Excuse me, ma'am. X-ray tube, where yes, Ma'am, why is it yes. angle mentioned as 2 theta in the previous slide? I'm going to explain you. Just wait. I'm going to explain you this. It's Okay. coming here. So X-ray diffractometer consists of three basic elements: an X-ray tube, a sample holder, and an X-ray detector. So X-rays are generated in a cathode tube. CRT is there by heating a filament that is made up of tungsten to produce electrons. So that is how electrons are produced there. Accelerating the electrons, that is obviously done by with the help of high voltage toward a target by applying a voltage and bombarding the target material with electrons. So when electrons have sufficient energy to dislodge inner shell electrons of the target material, characteristic X-ray spectra are produced. So these spectra consist of several components, the most common being K alpha and K beta. जो स्पेक्ट्रा आपका प्रोड्यूस होता है वो दो कंपोनेंट इसमें आपके मेन जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट that are produced, they are K alpha and K beta. And K alpha is also having subparts. They are having K alpha 1 and K alpha 2. And although the difference in terms of wavelength is not the bigger one, but difference is there. So K alpha 1 has a slightly shorter wavelength and twice the intensity of K alpha 2. So the specific wavelengths are the characteristics of the target material. That is copper. I mean, we are using this copper, iron, molybdenum, chromium, and most of the time you will see this copper is being used for this purpose. This is having some specific wavelength, which I am going to tell you. That is 1.5 angstrom. So filtering by foils or crystal monochromators is required to produce monochromatic X-rays needed for diffraction. So K alpha 1 and K alpha 2 are sufficiently close in wavelength such that a weighted average of the two is used. जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा 1 और के अल्फा 2 की वेवलेंथ के बीच में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, तो एक एवरेज इसका ले लिया जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की जरूरत है. सिंगल वेवलेंथ से ही हमको अपने सैंपल को इंटरेक्ट कराना है. So copper is the most common target material for single crystal diffraction. With copper K alpha radiation, that is 1.418 angstrom, these X-rays are collimated and directed onto the sample. As the sample and the detectors are rotated, the intensity of the reflected X-rays is recorded. So just recall the Bragg's law, how it works. तो जैसे ही आपका सैंपल और डिटेक्टर्स आपके रोटेट करते हैं और जो आपकी जो इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड एक्सरे की वो उसमें रिकॉर्ड की जाती है. So it is making this angle 2 theta. That is why 2 theta angle is there, which I am going to explain you more in detail. So when the geometry of the incident X-rays impinging the sample satisfy the Bragg's equation, constructive interference occurs and a peak in intensity occurs. So a detector records and processes this X-ray signal and converts the signal to a count rate, which is then output to a device such as a printer or computer monitor. तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमेशा आपका कंप्यूटर एसोसिएटेड रहता है. तो जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, जैसे आपका सीआरटी में पहले एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है, फिर उसके बाद जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपका जहाँ पे रोटेटर पे जहाँ पर आपका सैंपल होल्डर है वहाँ पे वो एक्सरेज जाके आपके सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं बाय मेकिंग दिस एंगल 2 थीटा. तो उस पर जो ब्रैग्स लॉ की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है. डिटेक्टर इस पूरे डेटा को आपके रिकॉर्ड कर रहा है. ये सारी चीज़ें आपकी एक स्पेक्ट्रम की तरह कंप्यूटर में रिकॉर्ड होके आ रही है, जो कि हमारा इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा ग्राफ हमारा इसमें प्लॉट होता है, जिसको भी अभी ग्राफ को भी मैं आपके एक्सप्लेन करूंगी. सो इन मटीरियल्स विथ रेगुलर सरफेस that is crystalline, the scattered X-rays undergo constructive and destructive interference, and this is the process of diffraction. The diffraction of X-rays by crystal is described by the Bragg's law, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया. that is n lambda is equals to 2d sin theta. तो इसमें जो आपकी कंडीशन है, आप इसमें आप ऐसा नहीं है कि amorphous मटीरियल का हम दो तरीके की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. either we are talking about amorphous material which are having short range ordering. short range ordering means they are not having ordering till long distance. उसमें कोई भी systematic crystal पैटर्न आपको फॉर्म नहीं होता है. that is why they are called as amorphous. और 7 क्रिस्टल सिस्टम में से वो किसी भी आपके क्रिस्टल पैटर्न को फॉलो नहीं करते. they are short range materials.
दूसरे तरीके के मटेरियल जिनकी हम बात करते हैं, दे आर लॉन्ग रेंज मटेरियल और क्रिस्टलाइन मटेरियल, जिनका एक फिक्स अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, आइदर दे आर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, 7 क्रिस्टल सिस्टम में से वो किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अपनी कंडीशन होती है। जैसे हम क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आपके जो 6 लैटिस पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, एक तो हमारे एंगल के टर्म में, एक हमारे डिस्टेंस के टर्म में है। तो हमारे जो A इक्वल टू B इक्वल टू C, और जो आपके 3 पैरामीटर्स और है वो एंगल के टर्म में है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये ऑल 6 आर इक्वल, इसमें आपके वो तीनों भी इक्वल होते हैं, इक्वल टू B इक्वल टू C, यूनिट लेंथ जो है वो भी इक्वल होती है, प्लस आपके एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं। टेट्रागोनल में ये कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है। तो हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अपनी कंडीशंस हैं लैटिस पैरामीटर्स के टर्म में। तो ये उन्हीं मटेरियल्स का एक्सरे मतलब हम लेते हैं जिनको मटेरियल्स क्रिस्टलाइन होते हैं। अमॉर्फस का भी ये रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन आपको कोई डेफिनेट पैटर्न इसमें नहीं मिलेगा। आप अलग से इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इजीली। आप जब उसका ग्राफ देखेंगे कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल का स्ट्रक्चर है कि ये हमारे अमॉर्फस मटेरियल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपका जो मेन प्रिंसिपल जो है वो दैट इज ब्रैग्स लॉ। तो ये जहाँ पे कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अब मैं आपकी उसी फिगर में जा रही हूँ जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ जो फॉर्म हो रहा है, ये आपका एक्चुअल में ये 2 थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। दैट इज वाई इसको हम 2 थीटा एंगल देते हैं, जो रोटेट करता है। यहाँ पे जो हमारी एक्सरे ट्यूब में हमारी प्रोड्यूस हुई हैं, फिर उसके बाद ये हमारी जो फिल्टर होके और कॉलीमेट होके जो एक्सरेज हमारी सैंपल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, दे आर बेसिकली मेकिंग दिस एंगल 2 थीटा, and then this filtration process there, and then again these are collimating, and then detector will receive all this information and diffraction pattern आपका फॉर्म हो जाता है, जो कि कंप्यूटर में हमको जो ग्राफ आता है आफ्टर प्लॉटिंग, इट इज 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ हमारा इसमें आता है। So I am moving further. So the diffraction of possible diffraction depends on the size and shape of the unit cell of the material. The intensities of the diffracted wave depends on the kind and arrangement of atoms in the crystal structure. तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मतलब आपका जो डिपेंड करता है कि किस तरीके का पैटर्न आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो रहा है, ये उस पर आपका स्पेक्ट्रम जो है डिपेंड करता है। So however, most materials are not single crystals but are composed of many tiny crystallites in all possible orientations called a polycrystalline, aggregate और powder materials. So यहाँ पे फिर आपके 2 क्लास के मटेरियल्स की बात हो रही है। एक तो आपने बात किया कि amorphous और crystalline. Amorphous means they are short range materials, they are not having fixed pattern. और अदर जो क्लास है वो है आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल, जिसमें आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम में से कोई ना कोई पैटर्न आपका फॉलो कर रहा होगा। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की अपनी अलग अलग सबकी कंडीशंस हैं। फिर आपके हम 2 तरीके के क्रिस्टल्स की बात करते हैं, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल्स पे यहाँ पे सिर्फ आपकी सिंगल ग्रेन होती है, कोई भी ग्रेन बाउंड्री नहीं होती है, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनी मटेरियल। एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जिसमें आपकी सेवरल ग्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं, सेवरल ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं, तो दे आर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। सेवरल बहुत सारे क्रिस्टलाइन आपके जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। दोनों का आपका जो एक्सरे आता है वो आपका डिफरेंट आता है। सो व्हेन अ पाउडर विथ रैंडमली ओरिएंटेड क्रिस्टलाइट इज प्लेस्ड इन एन एक्सरे बीम, द बीम विल सी ऑल पॉसिबल इंटरएटॉमिक प्लेन्स। तो वहाँ क्योंकि आपके जो बहुत ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी कि कई सारे प्लेन्स आपके प्रेजेंट होंगे, तो वो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के केस में ये आपका डिटेक्ट कर लेता है। एक्सरे की हेल्प से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं सारे हमारे इससे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इफ द एक्सपेरिमेंटल एंगल इज systematically changed, all possible diffraction peak from the powder will be detected. So इसको हम जितने भी आपके peaks उसमें materials में present है, जितने भी planes present है, वो सारे detect किए जा सकते हैं with the help of X-ray की help से हम सारे इसमें detect कर सकते हैं. So X-rays are generated by interactions of the accelerated electrons with electrons of tungsten nuclei within the tube anode. तो ये तो आपका प्रोसेस जो CRT कैथोड रे ट्यूब है उसमें ये प्रोसेस हो जाता है. So there are 2 types of X-ray generated, characteristic radiation and this is ब्रह्मस्थलम radiation. तो 2 तरीके की आपके इसमें जो रेडिएशन है 2 तरीके के प्रोड्यूस होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम द फिलामेंट कैथोड टू द टारगेट एनोड convert a small percentage of their kinetic energy into a X-ray photons by the formation of ब्रह्मस्थलम and characteristic radiation. तो 2 तरीके के आपके रेडिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक है ब्रह्मस्थलम, एक है आपका कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. तो इसमें आप अभी डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों दो तरीके के रेडिएशन में किस तरीके के डिफरेंस आपके आ रहे हैं. तो ये ब्रह्मस्थलम इंटरेक्शन जो है दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सरे फोटॉन्स फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब आर प्रोड्यूस्ड
by sudden stopping, breaking, or slowing of high-speed electrons at the target. When the electrons from the filament strike the tungsten target, X-ray photons are created. If they either hit a target nucleus directly or their path takes them close to the nucleus. So if a high-speed electron hits the nucleus of a target atom, all its kinetic energy is transformed into a single X-ray photon. That is, total absorption has occurred. तो अगर ये न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, अगर आपके जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो हम कैथोड रे ट्यूब में आपके जनरेट हो रहे थे, अगर ये आपके टारगेट एटम के न्यूक्लियस को हिट कर रहे हैं, तो ये वेमिस्थलन रेडिएशंस जो हैं आपके वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. तो उसमें जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके सिंगल एक्सरे फोटोन को ट्रांसफर हो जाती है. इट मीन्स कि वो आप उसको टोटली जो एक्सरे फोटोन्स है उसको टोटली वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. So thus the energy of the resultant photon, that is in kilovolt, is numerically equal to the energy of the electron. This in turn is equal to the kilovoltage applied across the X-ray tube at the instant of its passage. तो ये तो आपका वेमिस्थलन रेडिएशन हो गया कि अगर न्यूक्लियस के साथ में आपके टारगेट आइटम के न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं वो आपके वेमिस्थलन रेडिएशन होते हैं. Now दूसरे तरीके के रेडिएशन है, they are called as characteristic radiation. They are different from Bremsstrahlung radiation. So let's see how they are different. So characteristic radiation occurs when an electron from the filament displaces an electron from the inner shell of the tungsten target atom. They do not thereby ionizing the atom. तो ये इनर शेल के अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर टंगस्टन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस कैथोड ट्यूब में जनरेट हो रहे हैं, अगर ये सिर्फ आपके टंगस्टन एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इट मींस उनको आयनाइज कर रहे हैं, तब आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये न्यूक्लियस को आपके हिट नहीं कर रहे हैं टारगेट एटम के, ये सिर्फ आपके टारगेट एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हम KLM शेल्स की बात करते हैं तो आपका जो न्यूक्लियस के क्लोज है वो आपका K शेल है, फिर उसके बाद L है, फिर M है, फिर N है. तो ये आपके आउटर शेल्स के साथ ही एक तरीके से जो इनर जो आउटर या कह लीजिए इनर शेल्स जो है उनके साथ में बिल्कुल मतलब न्यूक्लियस से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. इन शेल्स के इलेक्ट्रॉन के साथ ही अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो जो रेडिएशंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज characteristic radiation. So when the displaced electron is replaced by the outer shell electrons, a photon is emitted with an energy equivalent to the difference in two orbital binding energies. So आपका जो इंटरेक्शन होता है तो इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, इसमें फोटोन आपके रिलीज होंगे. तो इस इंटरेक्शन में जो भी फोटोन आपके जो रिलीज होते हैं वो आपकी जो उनकी एनर्जी होती है वो दो ऑर्बिटल्स की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है. तो ये तो आपका एक दोनों का डिफरेंस हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेमिस्थलन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस. अब यहाँ पर आपके तीन मेथड्स भी हैं, देयर आर 3 मेथड्स. इसमें पहला मेथड से आपका लॉय डिफ्रैक्शन मेथड, देन है रोटेटिंग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन मेथड एंड देन है आपका पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड. तो इन तीनों मेथड्स के अपने अपने एप्लीकेशन है, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ. फर्स्ट इज लॉय डिफ्रैक्शन मेथड. तो लॉय डिफ्रैक्शन मेथड में द लॉय मेथड इज अ सिंगल क्रिस्टल डिफ्रैक्शन मेथड. The discovery of the phenomenon of crystal diffraction was obtained for the first time by the Loy method. The method requires a polychromatic beam. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी मोनोक्रोमेटिक बीम यूज नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज हो रही है. इट मींस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, जिसमें एक्सरे की सेवरल वेवलेंथ्स हैं. पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज हो रही है. द सिंगल क्रिस्टल प्लेस्ड इन द पॉलीक्रोमेटिक बीम डिफ्रैक्ट्स इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन. तो इसमें प्रोसेस आपका पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड से बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है. जो भी आपको हमने एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर दिखाया वहाँ हमने आपको बताया कि मोनोक्रोमेटिक बीम यूज की जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल का एक्सरे ले रहे होते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारे प्लेन्स की पॉसिबिलिटीज होती है, तो वहाँ पे एक सिंगल जो आपकी एक्सरे की वेवलेंथ आती है वो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है और डिफरेंट प्लेन्स को डिटेक्ट करती है. यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हम सिंगल क्रिस्टल का ले रहे हैं. जब सिंगल क्रिस्टल का हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की जरूरत होती है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं. तो इट इज वेरी स्पेसिफिक मेथड. सिंगल क्रिस्टल में के लिए इसको यूज करते हैं. इसमें पॉलीक्रोमेटिक बीम जो कि डिफरेंट वेवलेंथ, कई सारी वेवलेंथ उसकी होती है और ये आपके सिंगल क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करती है. और द सिंगल क्रिस्टल प्लेस्ड इन द पॉलीक्रोमेटिक बीम डिफ्रैक्ट्स इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस. सो द रिजल्टिंग Loy diffraction pattern depends on the orientation of the crystal. Thus the Loy method is ideal to detect the orientation of a सिंगल क्रिस्टल. तो इससे हमको सिंगल क्रिस्टल का ओरिएंटेशन पता चलता है. जो इसमें पैटर्न फॉर्म होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है, उससे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि हमारा सिंगल क्रिस्टल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. दैट इज टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ द यूनिट सेल, वो यहाँ पे इससे निकाले जा सकते हैं. तो ये लॉय डिफ्रैक्शन मेथड का आपका
डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्सरे बीम आपकी दी हुई है और यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल यहाँ पे बीच में रखा है, सैंपल होल्डर होगा और यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें आपकी जब एक्सरे बीम जो पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम है सिंगल क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करती है, ये टू थीटा एंगल का आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। और जो भी प्रोसेस आपकी अपने डिफ्रैक्टोमीटर में बताई, सिमिलर प्रोसेस आपकी फॉलो होती है और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पर आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, जिससे कि हम सिंगल क्रिस्टल का ओरिएंटेशन हम पहचान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा सिंगल क्रिस्टल ओरिएंटेड है। So a single crystal is mounted on a rotating table, which enables the crystal to be rotated through certain known angles and maintained stationary with respect to a beam of X-rays of different wavelengths. The crystal selects out and diffracts those discrete values of lambda for which crystal planes exist of spacing d and glancing angle theta satisfy Bragg's equation. So different wavelength single crystal के साथ में interact करती है और जो आपका particular orientation इससे by applying this Bragg's law इससे पता चलता है. So a narrow parallel beam is collimated on the crystal. Photographic films are placed either to receive the transmitted or reflected beams. So the resultant pattern consists of a series of sharp, well-defined spots. These are indicative of perfect crystal structure, whereas broken extended spots indicate lattice distortion and imperfections in the crystal. तो यहाँ पे जैसे इस फिगर में दिया है, यहाँ पर आपकी एक प्लेट लगी रहती है जो ये सारे डेटा को यहाँ पे रिसीव कर रही होती है। तो अगर क्लियर कट आपके ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपको इसके जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके कारण जो प्लेन्स डिटेक्ट हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। और अदरवाइज जो डिस्टोर्टेड प्लेन्स हैं, अगर वो स्पॉट्स आपके ब्रोकन आ रहे हैं या क्लियर नहीं है, देन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए हैं, तो वो लैटिस भी जो अगर कोई इम्परफेक्शंस प्रेजेंट हैं किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इससे लॉय डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारा सिंगल क्रिस्टल प्लेस्ड ऑन ए 3 एक्सिस, इसको हम जो जहाँ पे सैंपल को प्लेस करते हैं, आप अगर आप डिफ्रैक्टोमीटर देखेंगे जो रोटेटिंग हमारा जिसको हम रोटेटर कह रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज 3 एक्सिस goniometer in front of narrow beam of X-rays. So X-rays are not monochromatic in case of Lloyd diffraction method. 2 theta and d, I mean जो आपका एटॉमिक लेयर के बीच का डिस्टेंस है d और जो एंगल है 2 थीटा, फिक्स फॉर ईच सेट ऑफ प्लेन्स, ओनली लैम्डा इज वेरीड। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी वेवलेंथ वेरी कर रही है, 2 थीटा फिक्स है और आपका डिस्टेंस d फिक्स है। तो ईच सेट डिफ्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ which satisfies the Bragg's equation for it. So each diffracted beam for a different lambda. So incident beam passes through photographic film, hits the crystal and is back reflected toward the film. तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता है। अब आपका सेकंड मेथड है दैट इज रोटेटिंग क्रिस्टल डिफ्रैक्शन मेथड. सो इन द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड अ सिंगल क्रिस्टल इज माउंटेड विद एन एक्सिस नॉर्मल टू अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम. तो इसमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज की जाती है, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रिस्टल को ही यूज कर रहे हैं. So a cylinder film is placed around it and the crystal is rotated about the chosen axis. As the crystal rotates, sets of lattice planes will at some point make the correct Bragg angle for the monochromatic incident beam, and at that point a diffracted beam will be formed. So lattice constant of crystal can be determined by means of this method for a given wavelength. If angle theta at which a reflection occurs, the HKL known, it can be determined. So the reflected beam are located on the surface of imaginary cones. By recording the refraction pattern, both angles and intensities for various crystal orientations, one can determine the shape and size of the unit cell as well as an arrangement of atoms inside the cell. So it is different from Lloyd diffraction method. इस केस में आपकी मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ही सिंगल क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करती है, इससे हम लैटिस कांस्टेंट को निकाल सकते हैं. फिर आपका थर्ड मेथड है दैट इज पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है. इससे हम पॉलीक्रिस्टाइन मटेरियल्स का एक्स-रे डिफ्रैक्शन को जानने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं. सो इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक यूजिंग एक्स-रे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑन अ powder or microcrystalline samples for structural characterization of materials. An instrument dedicated to performing such powder measurement is called a powder diffractometer. Powder diffractometer stands in contrast to single crystal diffraction techniques, which work best with single well-ordered crystal. If a powder specimen is used instead of a single crystal, then there is no need to rotate the specimen because there will always be same crystal at an orientation for diffraction is permitted. Hence, a monochromatic X-ray beam is incident on powder or polycrystalline sample. The method is useful for samples that are difficult to obtain in a
सिंगल क्रिस्टल। तो ये मेथड आपका वहाँ पे यूजफुल है जिन मटीरियल जहाँ पर हम सिंगल क्रिस्टल के फॉर्म में अपने सैंपल को नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे जो भी पॉलीक्रिस्टाइन सैंपल आपका बना है उसका आप डिफ्रैक्शन पैटर्न जान सकते हैं, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप इंफॉर्मेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेथड से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो द पाउडर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैटिस पैरामीटर्स वेरी एक्यूरेटली. Lattice parameters are the magnitude of the unit vectors A, B, C, which defines the unit cell for the crystals. For every set of crystal planes, by chance, one of more crystals will be in the correct orientation to give the correct Bragg angle to satisfy Bragg equation. Every crystal plane is thus capable of diffraction. Each diffraction line is made up of a large number of small spots, each form a separate crystal. So that is how we can have this calculation. So our diffractometer produces waves at a known frequency, which is determined by their source. The source is often X-rays because they are the only kind of energy with the correct frequency for interatomic scale diffraction. Hence, electrons and neutrons are also common sources with their frequency determined by their de Broglie wavelength. So here we are using X-rays. So when these waves reach the sample, the atoms of sample act just like a diffraction grating, producing bright spots at a particular angles. By measuring the angle where these bright spots occur, the spacing of the diffraction grating can be determined by Bragg's law, that is 2d sin theta equal to n lambda. Because the sample itself is a diffraction grating, the spacing is the atomic spacing. इसलिए इसको ये atomic spacing है आपकी. The distinction between powder and single crystal diffraction is the degree of texturing in the sample. Single crystals have maximal texturing are said to be anisotropic. In contrast, in powder diffraction, every possible crystal orientation is represented equally in a powdered sample, the isotropic case. So this is the difference between anisotropic and isotropic. So PXRD means powder X-ray diffraction, and I just wrote in short manner, that is PXRD, powder X-ray diffraction, operates under the assumption that the sample is randomly arranged. So therefore, a statistically significant number of each plane of crystal structure will be in a proper orientation to diffract the X-rays. Therefore, each plane will be represented in the signal. In practice, it is sometimes necessary to rotate the sample orientation to eliminate the effect of texturing and achieve true randomness. So this table is showing the basic differences between Loy rotating and powder diffraction pattern. So by Loy method, we can know the orientation of the single crystal. By rotating crystal method, also by using rotating crystal method, we can know the lattice constant of the single crystal, and by powder method, we can know the lattice parameter of the polycrystal. So in case of Loy method, we use polychromatic beam. In case of rotating crystal method, we use monochromatic beam, and in case of powder diffraction method also we use monochromatic beam. So in case of Loy method, angle is fixed, and in rotating crystal method, angle we do vary angles, and in case of powder diffraction method also we do vary angles. So these are the differences among Loy rotating and powder diffraction methods. Now, application of this powder X-ray diffraction. So diffraction occurs when light is scattered by a periodic array with long-range order producing, that is basically crystalline material, consecutive interference at specific angles. So the atoms in a crystals are periodically arranged, thus diffract light. The wavelength of X-rays are similar to distance between atoms, that is why it is called as atomic spacing. So powder X-ray diffraction technique uses this principle to illustrate the crystalline nature of the materials. So the scattering of X-rays from atoms produce a diffraction pattern that contains information about the atomic arrangement in crystals, and from there we can know the exact structure of the sample. So amorphous material or short-range materials like glass, they do not have periodic array with long-range order, so they do not produce any significant peak in diffraction pattern. तो suppose अगर आप glass का लेंगे X-ray diffraction pattern, तो आपको कोई भी उसमें किसी भी तरीके की सिग्निफिकेंट पीक्स नहीं मिलेंगी. इट मीन्स वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप किसी एमोर्फस सैंपल का एक्सरे करें, और अगर आप क्रिस्टलाइन सैंपल का एमोर्फस का आप एक्सरे करें तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एमोर्फस पे आपको कोई भी सिग्निफिकेंट पीक ग्राफ में नहीं आएंगी. जो हम 2 थीटा वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ लेते हैं उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट पीक एमोर्फस के केस में नहीं मिलेगी. लेकिन आपके जो क्रिस्टलाइन जो कि लॉन्ग रेंज आपके हैं जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग है, वहाँ पर आपको एक
सिग्निफिकेंट पीक्स मिलेंगे, जिससे कि आपको एटॉमिक प्लेन्स पता चलेंगे और आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा आपका स्ट्रक्चर है मटेरियल का. So X-ray diffraction provides ample information about the lattice parameters. The positions of a diffraction peak is determined by the size and shape of the unit cell of the crystalline phase. Peak represents a lattice plane and therefore can be characterized by Miller index, that is HKL. So if the symmetry is high, as in case of cubic or hexagonal, it is not difficult to identify the peak index for an unknown phase. So this is very useful in solid state chemistry to identify new materials. Once a pattern gets indexed, it serves as reference for new entities. So this is the typical graph which we can observe with the help of X-ray diffraction. So you can see that in x-axis we have this 2 theta, that is in degree, and intensity. So we can have this graph, that is 2 theta versus intensity graph. इसमें आपका NaCl जिसका स्ट्रक्चर आपका फेस सेंटर क्यूबिक होता है, एक्सिसी होता है, उसका दिया हुआ है, जिसकी कंडीशन आपकी से मैंने बताया कि क्यूबिक के केस में A equal to B equal to C, इसमें वैल्यू भी दी है 5.64 एंगस्ट्रॉम, so that we can calculate from X-ray diffraction parameters. and इससे ये डिफाइन हो सकता है इजीली कि हमारा जो मटेरियल है वो क्यूबिक बना है. इसका NaCl का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. तो देखिए डिफरेंट प्लेन्स जो है यहाँ पे ये डिटेक्ट हुए हैं. तो इसमें आपका 2 थीटा है, इंटेंसिटी है, और आपको आप स्पेसिंग आप ऑलवेज कैलकुलेट कर सकते हो. ये डेटा एनीवे आपका जहाँ भी जब आप एक्सरे कराते हैं ये डेटा वहाँ पे दिया जाता है, जिसमें आपका डी स्पेसिंग के करस्पॉन्डिंग आपका कितनी आपका जो किस एंगल में आपका कितने आपका कौन कौन से प्लेन्स आपको मिल रहे हैं, ये सारा डेटा वहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाता है. आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड की जाती है. तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें. तो लैटिस पैरामीटर वगैरह इससे इजीली कैलकुलेट हो जाता है. एंड जो उसका अदर एप्लीकेशन है दैट इज पॉलीमॉर्फ स्टडी. So PXRD is helpful in identification and characterization of polymorph. So polymorphism describes the existence of a solid material in more than one form or crystal structure. तो वहाँ पे यहाँ पर भी स्टडी करने के लिए जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं, एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड यूजफुल है for monitoring the stability, method development and validation for identification and quantification of drugs in pharmaceutical industries. The part of the X-ray that is not scattered simply pass through the next layer of atoms, where again part of X-ray is scattered, out of it passes through the next layer. So this causes an overall diffraction pattern, similar to how grating diffraction a beam of light. So in order for an X-ray to diffract, the sample must be crystalline, and the spacing between atoms there must be close to the radiation wavelength. Then it beams diffracted by two different layers are in phase, constructive interference occurs, and the diffraction pattern shows a peak. However, if they are out of phase, it means destructive interference is there, so no peak is observed. So diffraction peak only occur if it follows Bragg's law. So since a highly irregular structure is needed for diffraction to occur, only crystalline solids diffract. The PXRD, that is powder X-ray diffraction on amorphous materials, do not depict any significant peak in diffraction pattern. And the other thing which we can study by PXRD is to check the crystallinity. So the XRD analysis of crystalline compounds gives a diffraction pattern consisting of a well-defined, narrow, sharp and significant peak, while amorphous material do not give clear peaks, rather than pattern has noise signals, smeared peaks. Smeared peaks means broad peak, और यूजुअली जो क्रिस्टाइन मटेरियल की पीक्स आती है वो बहुत ही शार्प आती है, और इट कैन हैव सम शॉर्ट ऑर्डर बम्प्स. सो मैनी पॉलीमर्स डिपिक्ट सेमी क्रिस्टाइन बिहेवियर एंड प्रोड्यूस्ड हेलो पैटर्न्स. सो पाउडर XRD कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द क्रिस्टलिटी बाय कंपेयरिंग द इंटीग्रेटेड इंटेंसिटी ऑफ द बैकग्राउंड पैटर्न टू दैट ऑफ द शार्प पीक्स. Then the other thing which we can calculate with the help of this powder X-ray diffraction method, that is particle size and crystallized size. So there is a difference between particle size and crystallized size. The term particle size and crystallized size refer to two distinct properties in a material. Particles comprise of several small crystallites. So crystallized size is the fundamental property of the material. Properties of nanomaterials depends on the crystallized size and not particle size. So PXRD can measure millions of crystals and accurately determine the size distribution of nanomaterial. Then phase transition can be detected with the help of PXRD by applying, obviously we have to apply temperature conditions. So some crystal exhibit several phase transitions such as barium titanate. Barium titanate में आपके तीन transitions होते हैं, तीन phase transitions होते हैं. So they all can be detected with the help of phase transition X-ray diffraction. So with temperature variation, these different phases occurs.
तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आपके डिफरेंट फेजेस आते हैं, क्यूबिक टू टेट्रागोनल, टेट्रागोनल टू ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक टू रोम्बोहीड्रल। तो इसका जो आपका फ्री टेम्परेचर होता है बेरियम टाइटेट का, वो आपका 120 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो ऑल दिस ट्रांजिशन we can observe with the help of temperature dependence X-ray diffraction. So at this point, new diffraction peaks will appear or old ones disappear according to symmetry of the new phase. तो इन ट्रांजिशन पॉइंट्स पे क्या होता है कि आपकी कुछ सिमिट्रीज आपकी अपीयर होती है, कुछ आपकी डिसअपियर होती है। इट मीन्स आपका फेज जो है वो चेंज हो रहा है। हर फेज की, हर जैसे क्यूबिक फेज की अपनी सिमिट्री है, आपकी आई मीन सॉरी टेट्रागोनल फेज की आपकी अपनी सिमिट्री है, ऑर्थोरोम्बिक फेज की आपकी अपनी सिमिट्रीज है। तो वो सारी आपकी अपीयर होंगी, कुछ डिसअपियर होंगी। इट मीन्स फेज चेंज वहाँ पर हो रहा है। सो दीज फेजेस हैव डिफरेंट सिमिट्रीज, सो डिफरेंट फेजेस विद करस्पॉन्ड टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड। इन सच केसेस द सिमिट्री में चेंज बिकॉज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज distorted rather than replaced by a completely different one. Then now I'm going to summarize this particular lecture. So X-ray diffraction is a technique used for identifying the atomic and molecular structure of a crystal, in which the crystalline atoms cause a beam of incident X-rays to diffract into many specific directions, and this form a pattern. This type of pattern is called the X-ray diffraction pattern. And when the X-ray is incident onto a crystal surface, its angle of incidence theta will reflect with same angle of scattering theta, and when the path difference d is equal to a whole number n of wavelength, constructive interference will occur. So X-ray diffraction method along with several applications of order X-ray diffraction were explored in this particular lecture, and these are the references which I have used to prepare these slides. So a review article on this powder X-ray technique and its applications in science and technology by Ashish Chauhan and Priyanka Chauhan, and that was published in Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques. And the books by very famous book by B.D. Kuliti, that is Elements of X-ray Diffraction. So if you have any question now, please ask. I am done with this lecture. So any one of you, if you have any question, please ask. Any question? We can have discussion. If you have any question, please ask. Ankit, Kajal, Shubham, Akash. Please ask the questions if you have any. No, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, is it clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, Thank ma'am. you, ma'am. Okay, and if you have any query, you can WhatsApp me, Yes, or ma'am. you can ask me through email. I will try to solve your query. Or if you want to ask any question just now, you can ask. So I should stop, or anything else you want to ask? मैडम ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। Okay. I definitely I will share the PPT. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Then all of you please sleep now. Okay. Thank you so much.